Yes, now it's better. Yeah, thank you. Yeah, so we are talking about magical people who made a difference. So there are some people who have faces जो हमें याद है कि इस इंसान ने मेरे लिए ये किया था. There are people who are faceless, but they too have made a difference in our life. Like I was just sharing that when I was in class 10 or 11, I got the opportunity to present a program on All India Radio, which was, I think, U1. That was the channel on which I had presented a program where I was like an RJ. I shared my favorite songs, and I said something in between about the song or about the feeling or whatever. And I got my first check, which was for rupees 1500, 15 rupees. 15 rupees at that time, I mean, seemed like, 15,000 to me. Yeah. So, but what I am talking here about is not about the money. I'm talking about the person who invited me to present that program actually did the seeding for me. उससे पहले मैंने कभी भी इस तरह से एड्रेस नहीं किया था या इस तरह से पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया था. दैट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग इन अ वे व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग ऑन द रेडियो. And that was the seeding done by that person. That person gave me an opportunity to showcase my passion, showcase my capability, or showcase that I am good at it. I never realized it till now when I was just reading this sentence, magical people who made a difference. I was trying to connect with that 15 rupees check. I was like, it was an aha moment for me right now. That person actually is the guy who made a difference in my life. Because of him, I am today leading as a trainer, as a coach, as a public speaker. It's because of him. So, like that, there's so many people who have touched our lives, who have actually made a difference in our life in a subtle way or in a very apparent way. पर उन्होंने करा है कुछ जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आया जो शायद पहले ना आता, है ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच पीपल एंड वी आर ऑलवेज इन डेब्ट टू देम. उनका तो हम देना कभी दे ही नहीं सकते, पर एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड तो दे सकते हैं ना. सो लेट्स रीड अबाउट इट. या हु इज गोइंग टू रीड टुडे? कौन पढ़ने वाला है? I'll read. ओके हमस, प्लीज गो अहेड. Day 12. We need to start on the topic. I'll just go. Yeah. Can you read it now? Yes. Magical people who made a difference. Yeah. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875-1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Okay, so what it says is कि कई बार ऐसे होता है कि हमारी लॉक कम हो जाती है. We feel low. We feel we can't do it. Right? हमसे नहीं होगा. This is not something which I am capable of doing. Or sometimes it happens that emotionally we are very down. And somebody comes and lifts us up. तो जैसे भी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में हम क्या करते हैं? हम एक दिए से दूसरे दिए को जलाते हैं, या हम दियों को मोमबत्ती से जलाते हैं. तो क्या करें, एक फ्लेम से हम दूसरी मोमबत्ती को या दूसरे दिए की फ्लेम को जला रहे हैं. और कितनी बार ऐसे होता है ना कि किसी का वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ऐसा लगता है बंद होने लगी है,
जैसे वो बुझने लगती है तो हम दूसरे दिए से या दूसरे मोमबत्ती से उसको दोबारा जला देते हैं, है ना, ताकि उसकी फ्लेम फिर से जैसे वो फड़फड़ा रही होती है तो उसको थोड़ा सा और सपोर्ट दे के उसको फिर दोबारा से जला देते हैं, होता है ना ऐसा। सो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी होता है। आई रिमेम्बर इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई वाज फीलिंग वेरी लो, like I've never hit so low in I don't know how many years. I don't even remember. I felt so low in my life. I was feeling very low, and I was not able to get up, and I was like getting into depression kind of a thing. And I my doctor said, "तुझे कुछ नहीं करना है. You start going to the park. Start go for walk." I said, "I can't walk. I don't have energy." He says, "Doesn't matter. Go by car. Take your car or take a rickshaw. Just go and sit there." I started going. Vanita and we used to just take a rickshaw and we just go. She will go for a walk, and I just whatever distance I am able to walk, I will walk, and then I will sit down. There was a guy. I had bought ACs from him some 10 years ago, 10, 15 years ago. But he knew me by face that I've been his customer, and he stays in Shalimar Bagh. So he has created a morning group where I think there are around 50, 60 people who come in the morning and they do yoga and they do um, this thing clapping and they do hasya yoga and they do all kinds of things. They do on Monday they do dancing and all. So he's created that group. I was sitting, near that place where they have these activities, and I was sitting on a bench, and I was, lost in my own thoughts, and so, so this guy walks up to me and comes and sits next to me and said, "आप क्या हुआ आपको?" अरे मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा हाँ, of course I know you. And he says, इतनी मायूस क्यों बैठे हो? जिंदगी खत्म खत्म थोड़ी हो गई है, अरे जिंदगी जीने के लिए होती है. So I said I was feeling this thing कि I don't have anybody to talk to and whatever I was in mental frame at that time. He said, यहाँ आओ ना, sit with us. Join our group. Even if मैंने कहा मेरे पास तो एनर्जी नहीं है कुछ करने के लिए. He said, doesn't matter. Come and sit. इतनी दूर मत बैठो, जहाँ हम लोग कर रहे होते हैं वहीं आके बैठ जाओ बस. That will make you feel better. And it actually did. And I'm so grateful to him that, in a subtle way, he rekindled my light. And he, actually helped me to come out of that. And now when he sees my videos and all, he says, "Ab bhaiyo." I said, "Ah, it's because of you that, I could come out of it. Uh, you know, Without support, many times it happens. You find it difficult." So this is the kind of people who come into your life and give direction to your life, or sometimes, pulls you up from the dumps. So just wanted to share that. So today we are going to talk about such people. Yeah. Every one of us has received help, support, or guidance from other person at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person has pivotal in magically changing the direction of your life for the better. Yeah, pause. Like when I was talking about that All India Radio, the person who actually gave me the opportunity to present that program, he didn't know, I didn't know that he's going to, help me find my passion. And one day I will be actually speaking to people as a trainer, as a mentor, as a coach, as a speaker. At that time,
I never realized it. It was just for fun I did that because I loved music. I loved talking about, emotions. Even at that time, I used to talk about emotions. Can you believe it? And no wonder I'm an emotional well-being coach today. Somewhere that incident and that person changed the course of my life. My life went through whatever it went through. Ultimately, it has come to that point where it is actually reflecting that it happened because of that. In future, I have realized it. Like, imagine I was in 10th or 11th standard, and what is my age today? And I've never realized it. Only right now, when I'm reading this, it is just, flashes back. Oh, it is because of that incident. It is because of that person who gave me that chance that I am who I am today. In future, you realize it. That is exactly what this paragraph is talking about. Yeah. The person may have been a teacher or coach or uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been a person who introduced you to our current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Okay, Maybe pause, they were. pause, pause. So when it says na, it could be a teacher. तो मुझे अपना हिस्ट्री का टीचर याद आ गया. व्हेन हमारे टाइम पे व्हेन 11th या 12th में जब लास्ट ईयर होता था तो वी यूज्ड टू टेक ऑटोग्राफ्स. ये छोटी छोटी ऑटोग्राफ बुक्स होती थी, उस पे हम अपने सारे फ्रेंड्स के, टीचर्स के ऑटोग्राफ्स लेते थे. सो दिस पर्टिकुलर गाय हैड रिटन इट इन हिंदी. एंड मैं जब बात कर रही हूँ ना, तो मेरी आंखों के सामने उनके लिखे हुए वो वर्ड्स, उनकी हैंडराइटिंग दिखाई दे रही है. He say, आप एक प्रवीण वक्ता हैं. This is what he told me. He wrote my in autograph book. एक आप एक प्रवीण वक्ता हैं. आप अपने इस व्यक्तित्व को बनाए रखिएगा. Can you see that? Can you see that? It's not a coincidence. And when today people say that when you speak, there's so much of clarity and you come across so clearly whatever you want to say. When people watch my videos and tell me that uh, आप कितनी आसानी से, कितनी सिंपल तरीके से कोई भी बात कह देते हो और कितनी अच्छी तरह से और क्लैरिटी से बोलते हो. Now when it says teacher, I've read this book so many times. The moment it said teacher, मुझे अपने वो हिस्ट्री के मास्टर जी याद आ गए, जिन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक में लिखा था, आप एक प्रवीण वक्ता है. प्रवीण वक्ता, orator, a person who's a good speaker. Can you believe it? How these people have impacted, and कहीं ना कहीं मेरे subconscious mind में register हुआ होगा, because we become जो हमारे beliefs बन जाते हैं, right? So kahin na kahin, he is also instrumental in who I am today. Yeah. So ऐसे बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में भी होंगे जिन्होंने कभी कुछ कहा होगा या आपको कुछ ऐसा दिखाया होगा कि आपको दिख गया कि मुझे ये करना है या मुझे इस डायरेक्शन में जाना है. राइट. हाँ जी, पढ़िए. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her to me, becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just at the time I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. So
She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Okay, pause. Now, her grandma just taught her to say thank you, for everything. तो हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, कुछ भी कोई देता है तो उसे थैंक यू बोलना है। कुछ लोगों के लिए वो वहीं तक रुक जाता है कि हाँ, जब किसी ने कुछ कहा या कुछ दिया या दरवाजा खोल दिया तो हमने उसको थैंक यू बोल दिया, राइट? फॉर सम पीपल it has become a way of life, like people who are practicing gratitude, because वो एक बीज, that seeding which was done by her grandmother has flourished into a big huge tree today, जिसमें कितने सारे ब्रांचेस हैं, कितने सारे फ्रूट्स लग रहे हैं लोगों की जिंदगी में. When I talk about fruits, when they're getting so much of value, so much of benefit out in their lives because of this particular practice. तो वो एक छोटा सा बीज जो उसकी दादी ने बोया था to say thank you has turned into a huge burger ka type of पेड़ which encompasses all the continents and people and caste, creed, age, religion, and is bearing fruit for everybody. But at that moment, she didn't realize it. इसी तरह से आपने आज देखना है ऐसा क्या था, किसी ने कहा था या किसी ने कुछ आपको डायरेक्शन दी थी और उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं पता थी, पर वो आज आपको बहुत फायदा कर रहा है. That person could be a person known to you, like her grandmother, or maybe my history teacher, or maybe somebody who doesn't have any face, जो आपको याद भी नहीं है. Just the person who invited me for the All India Radio program. I don't even know who that guy was. But I remember that. That was the seeding. And I'm getting the results now. तो इस तरह से आपने आज सोचना है वो कौन से ऐसे लोग हैं, वो ऐसे कौन से महान इंसान थे, महान ही कहूंगी मैं उनको, जो हमारी डायरेक्शन, जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं. दे आर लाइक गाइडिंग फोर्सेस, गाइडिंग एंजल्स फॉर अस, जो हमें कभी जरा सा रास्ता दिखा के निकल जाते हैं. अब this guy who actually pulled me out of that dumps when I was going through that very low phase. I mean, I didn't even know him that well that he will walk up to me and talk to me. At the most, we used to just look at each other and smile whenever we used to cross each other. That's all. But he walked up to me, sat with me on the bench, and spoke to me because he saw that I needed help. But how many people do that? Because he is instrumental. He was the guy who rekindled my flame. Yeah. So आपने आज देखना है ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको उस टाइम सपोर्ट किया जब आपको बहुत जरूरत थी, या आपको उस टाइम पे गाइड किया जब आप बहुत कंफ्यूज थे, या आपको ऐसा कुछ बताया आपके बारे में जो आपको शायद नहीं मालूम था. मे बी almost didn't know that she could write a book. There was somebody who told her, come on, you can, you're very good at it, give it a try. And she's written books and she's known for it now. So there are people who have helped us, guided us, rekindled us, or it could be somebody who just listened to you when you needed somebody to talk to, you know. So just think about such people in your life. Yeah. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you Okay, have done, pause. So today the assignment is that you have to sit in a quiet place. Now quiet place, it's a working day. अगर आपको quiet place वैसे नहीं मिल रहा, so if you're traveling from one place to another, you can be with your own self. You don't have to chit chat with everybody who's traveling with you. You can just be with your own self at that moment. Or
Even if, you know, at work, or if you come back home and you just want to relax, at that moment, just think about those people who have impacted your life. आपकी लाइफ को कोई डायरेक्शन देके चले गए हैं, या आपको उस टाइम पे उन्होंने उठा दिया जब आप बहुत ज्यादा अ, किसी की जरूरत महसूस कर रहे थे, और कोई अचानक आया और आपको कुछ बोल के चला गया, विच एक्चुअली लिफ्टेड यू अप। कई बार ऐसे होता है ना, कोई आया, उसने कुछ एक बात बोल दी। आई मीन, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस गाय हु इज इन अमृतसर ना, जो मैं बता रही थी, मेरा यूजुअल टैक्सी वाला जो है। सो व्हेन आई थिंक व्हेन आई वेंट विद श्रुति, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर सम टाइम, एंड वी वर ट्रैवलिंग बैक इन हिज कैब, एंड श्रुति ने कुछ ऐसे बोला कि मैडम ये सेशन करती हैं, कुछ पता नहीं किस तरह से ये बात निकल के आई, एंड he was dealing with something and he just shared something, and I must have said something to him which made a difference in his life, and he holds me in so much of respect, because maybe I became that person in his life, which at that moment when he needed some guidance, one sentence from me has changed the course of his life. ऐसे हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक सेंटेंस या एक कही हुई बात, चाहे उन्होंने ऐसे ही बोल दी हो, आपको एडवाइस देने के लिए नहीं बोली, बट बोल दी कुछ, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, वो आपके लिए कुछ मायने रखती है, वो आपके लिए जिंदगी को रुख बदलने का एक जरिया बन गई। सो यू हैव टू थिंक अबाउट सच पीपल, सिट डाउन quiet at a quiet place so that there is no disturbance, and you are able to just focus on those people who made a difference in your life. Yeah. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Yeah, pause. So you have to think about three such people, okay? वैसे तो हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, but today we are just going to think about three people जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। मतलब I am surprised कि इस बार जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो नए लोग निकल के आ गए हैं। The new people who have come out, जो मुझे दिखाई दिए कि अरे इन्होंने मेरी जिंदगी में डिफरेंस कॉज किया, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। Like I was talking about these three people, right? आज मैंने तीन लोगों की बात कर दी ना. I talked about the All India Radio person. I've talked about my history teacher, and I've talked about this person in the park. So the three people, new people have shown up when I'm thinking about it. So ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में. आज आप जब सोचने बैठोगे, वो तीन इंसान, वो तीन नाम कौन से उभर के आते हैं, वो शायद आपको भी नहीं पता है. But the only thing you have to do is just sit down and think about three people who have helped you change the course of your life, or helped you when you needed the help, or guided you when you were looking for directions. Anybody, such three people. And उस इंसान के बारे में आपने सोचना है. You know, हमें ये आदत होती है. I was just preparing for my video which I'm supposed to make, and I was just uh, reading somewhere that जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं किसी से, कोई हमें ट्रिगर कर देता है, एंड वी गेट हर्ट अबाउट व्हाट द पर्सन सेड और डिड, हम अपने मन में उससे बातें करते रहते हैं. यस और नो, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, Yes, है ना? हम मन ही मन उससे बात करते रहते हैं, चाहे हम उससे में जो हम उससे भड़ास निकालना चाहते हैं, वो हम अपने ख्यालों में निकालते रहते हैं. Someday you talk to me like this, and we're just talking, having a conversation with that person, and वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो नेगेटिव ही होती है ना? बिकॉज हम अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, अपना रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज हम वैसे तो कर नहीं सकते हैं, तो हम अपने ख्यालों में ही कर रहे होते हैं, एंड इट ऑक्यूपाइज आवर माइंड सो मच. वो ना हमें एक तरह से पैरालाइज कर देती है वो थॉट्स. दोज आर नेगेटिव थॉट्स, बट वी डू दैट कॉन्वर्सेशन. सो आज आपने वो कॉन्वर्सेशन करनी है
with those three people who made a difference in your life, जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक नया रुख दे दिया, एक नई डायरेक्शन दे दी, राइट? तो आज आपने उन 3 लोगों के बारे में सोचना है और उनसे बातें करनी है। आप चाहे तो इमेजिन करें वो आपके पास बैठे हैं और आप ज़ोर से बोल के बातें कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे हम मन ही मन बातें करते रहते हैं लोगों से, आप वैसे बातें कर सकते हैं, राइट? एंड थिंक अबाउट 3 पीपल, पहले एक से बात करनी है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। एंड यू विल फील सो मच ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इन यू, बिकॉज़ आपने उस तरह से उनसे कभी बात की ही नहीं होगी। उनके बारे में शायद वैसे सोचा ही नहीं होगा। बट टुडे यू हैव टू डू दैट, राइट? हाँ जी, पढ़िए। Once you have your once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Yeah. Make sure So pause. So think about one person first एंड तीनों लोगों के बारे में ना एक ही बार बैठ के सोचना है। और वो क्यों करना है वो मैं बताती हूँ अभी। अगर आप एक इंसान के बारे में सोचा, ये सेशन के बाद सोच लिया, दूसरे के बारे में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब सोच रहे हो, तीसरे के बारे में शाम को जब चाय पी रहे हो तब सोच रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। It will definitely help, but it will not have that much of impact, the kind of impact we want to bring in our life by doing this practice. आपने पढ़ा ना बुक के शुरू में कि अगर आप सिर्फ काउंट योर ब्लेसिंग्स और रात को मैजिक रॉक कर रहे हो, आपकी जिंदगी उससे भी बदल जाएगी, उससे भी बदल जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। हो सकता है 2, 3, 4, 5 महीने, कितने महीने लग जाएं, बिकॉज वो फीलिंग्स जो है ना, बिकॉज फीलिंग तो फ्यूल है। जब वो फीलिंग्स जो है ना उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है, जब उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है तो उसकी पावर नहीं बढ़ती है ना? तो उस पावर को बढ़ाने के लिए रोंडा ने हर दिन के लिए हमें नए नए चैप्टर्स क्रिएट किए हैं, नए नई प्रैक्टिसेस बताई हैं ताकि हम उसको बिल्डअप करते जाएं। वी गिव अ मोमेंटम टू इट एंड वी स्टार्ट एडिंग मोर पावर टू द प्रैक्टिस वी आर डूइंग एवरी सिंगल डे। उसके लिए आपको 3 लोग जिनके बारे में ये करना है, उन तीनों का एक ही बार में बैठ के कीजिएगा। फर्स्ट डू इट फॉर वन पर्सन एंड आफ्टर यू फिनिश डूइंग इट फॉर दैट पर्सन, देन pick up the second person, talk to that person, tell him, tell her, आप क्यों उसके साथ ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप क्यों ग्रेटफुल हो उसके लिए, आपकी जिंदगी में उन्होंने क्या डिफरेंस कॉज किया है, एंड देन गो टू द थर्ड पर्सन, राइट? हाँ जी। make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, your uh, if you split up the magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. या Yeah. तो अगर उसको हमने मैग्नीफाई करना है, अगर हमें उसकी पावर को बढ़ाना है, और उसी लिए हम कर रहे हैं ना ये प्रैक्टिस, कि हमको रोज रोज प्रैक्टिस कर करके अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को इतना बढ़ा लेना है, इतना बढ़ा लेना है कि हमारे सपने अपने आप साकार होने शुरू, वो पावर उस एरिया, उस डायरेक्शन में हमारी हमारी जो है वो डाइवर्ट हो जाए और हमें वो सब मिल जाए जो हम चाहते हैं। हमने अपने ड्रीम्स इसीलिए लिखे हैं ना, वी आर फोकसिंग ऑन दोस ड्रीम्स एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी वर्किंग ऑन आवर ड्रीम्स। क्योंकि इस बुक में आपको रोंडा ने बताया कि फर्स्ट 12 days इट्स गोइंग टू बी अबाउट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी रिसीव्ड इन द पास्ट एंड व्हाट वी हैव इन द प्रेजेंट। तो आज हमारा 12th चैप्टर है एंड वी आर जस्ट कंप्लीटिंग दैट पार्ट ऑफ द बुक, जहाँ हमने पास्ट में जो कुछ भी मिला है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारा करियर है, हमने उन सब चीजों के लिए, पास्ट के लिए हमने ग्रेटिट्यूड दिया। उसके बाद जो प्रेजेंट में हमारे पास है हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया, राइट? अब हम इस चैप्टर के बाद बात करने वाले हैं
फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, हमारे सपने क्या हैं, इन सब एरियाज में, उनके लिए आज हम ये वाला जो चैप्टर कर रहे हैं, उससे क्या करने वाले हैं, हम अपने मैजिक के पावर को बढ़ाने वाले हैं, सो दैट वी गेट दोज डिजायर्ड रिजल्ट्स इन दोज एरियाज ऑफ लाइफ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके लिए ये प्रैक्टिस एक ही जगह बैठकर और एक ही बार में तीनों लोगों का करना जरूरी है, मतलब आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई? बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर ड्रीम्स, इट्स वाइटल फॉर योर ड्रीम्स। द बुक सेड ना, पीछे किसी चैप्टर में बोला था ना, गिविंग ग्रेटिट्यूड इज वाइटल फॉर योर लाइफ टू ट्रांसफॉर्म। या, हाँ जी। Make sure you do this magical practice with all three people in one time, in one session. Okay, here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. Okay, pause. So I just want to share a small incident which happened yesterday. So I attend one session immediately after our session, in which we create ideas. So it's called idea mastery. So in that, yesterday, the person said that, what is it that you people say you are good at, and you can actually start earning from it. And I was just looking at, okay, I'm good at this, I'm good at that, I'm already doing it. We are so limited in our thoughts. हम लोग ना उतना ही सोचते हैं जो हमें पता है अपने बारे में. And suddenly he said, you have to write 10 things. अब वो 10 things कहाँ से आए? I was just thinking, and suddenly two ideas popped up. One was, recently a friend of mine came to my house because she wanted to do her trousseau shopping. She's getting married and she wanted my help because I'm very good at shopping and I know where to buy and all that. And you will be surprised when we went to the shops. The shopkeeper was trying to show things and saris and suits. I said, भैया क्या मैं अपने आप देख सकती हूँ? He said, हाँ. I just got up and I picked up, ये निकाल दीजिए, वो निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए. I just asked him to show 5 or 6 of them. And you won't believe it, those were the best pieces and exactly what she wanted. And depending on the costing and all, we picked up whatever was required. And I suddenly realized that, yeah, I'm very good at it. I can help people with their trousseau shopping and make money out of it also because people are doing that. That was the one idea which came up. The other idea was that when I people come to my house and they say, "Tera ghar kitna acha lagta hai, everything is at proper place, और कितने अच्छे से decorate करती है." And many times I've got compliments from people, and people seek my advice कि मैं अपना घर का ये करने की सोच रही हूँ, my friends and all, मुझे बता क्या करना चाहिए and all. And where I'm staying right now, my friend, she's a celebrity, right? And she has beautiful she used to have beautiful parlors and academies. She still have academies, and she's built this beautiful house in Gurgaon, and they are doing it and doing it up and all. She's asking me, her daughter is asking me, आंटी आप मेरे साथ चलो, let's do some हम मैं फ्लावर की शॉपिंग करनी है यहाँ पे, आप मुझे बताओ कहाँ पे क्या करना है. And I was just thinking, yeah, even I can start doing that. I can start with my friends. And these ideas never came to me earlier. And the third thing which came to my mind was, I have beautiful saris from different parts of India, and I'm so proud of them. And I was thinking that from November, 1st November, whole of November, I'll be showcasing my saris every single day.
And I was just thinking, I can actually help people in picking up the kind of saris they should buy within their budget. And if they want to buy from a particular region or something, I can do some research on that. It's not that I'm very equipped with all the information, but yes, this is one area which I can explore. But these things never occurred to me earlier. People used to say in the passing कि यार तू ये बहुत अच्छा करती है, तेरी साड़ियाँ कितनी अच्छी होती हैं. Like I feel so proud of my saris that a sari which I bought 20 years ago, I can still wear after 20 years. They are so so elegant and so this thing that age doesn't have anything to do with that. मैं आज भी वो साड़ी पहन सकती हूँ, मैं 10 साल के बाद भी वो साड़ी पहन सकती हूँ. My mother also could wear those saris. So I'm so proud of my choice. So I was just thinking, these are the ideas which never cropped up in my mind, that I can actually start using them to help people. I'm solving their problem and I'm getting paid for it. But ये idea किसने दिया मुझे? The guy who was conducting that session. So somewhere he's instrumental in that. तो हमें कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, बट कोई जरा सा नच करता है हमें, या हमें कहता है कि उस कोने में देख, इस कोने में देख, and then we start looking at nooks and corners of our own side, our own personality, and then we find. So ऐसे आपकी जिंदगी में भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने ऐसे ही कुछ बोल दिया, पर आपको कुछ मिल गया. जैसे मुझे कल कुछ मिल गया, मैं इस पे काम करूं ना करूं, that's a separate thing. That idea, it got created yesterday. अरे हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ. Yeah, हाँ जी, पढ़े. Like she's saying that when she was confused, she didn't know what to do, and she said कि तू ये कर ले, and she went to France, and she's doing whatever she's doing there. So similarly, this guy said this, and if I start doing this tomorrow, I will be always grateful to this guy because he's the one who actually pushed me to go beyond my limited thinking. Right? Yeah, buddy. It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life. From doing this practice, it numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. Yeah. So what it says is you can never do enough. आप जितना भी करते जाओ कम है. जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ही जिंदगी में चेंज आएगा. जिंदगी में things you want in your life, you will get it. Yeah. It's never too much. It's never too much, and it is never enough. So, and this is one of the most powerful practice. क्योंकि जब आप बोलते हो ना कि क्यों, जैसे मैंने अभी शेयर किया, that Amit asked me to look for 10 things, and because of that I came up with these ideas, right? So I am grateful to him for the ideas I generated because of his pushing me, right? So when you say why are you grateful, you feel more gratitude rather than just saying ना. वो थोड़ा लिप सर्विस टाइप ही हो जाती है कि सिर्फ बोल रहे हैं, फील तो किया नहीं. फीलिंग तभी आती है जब आप वाई सोचते हो. The why in our life is very important. हाँ जी. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. Yeah. When you So ideally, you should be talking to them as if they are sitting, तुम्हारे सामने बैठे हैं. आप उनसे दिल की बातें कर रहे हो. Because ये दिल की बातें हैं ना, और दिल से ही आएंगी. So आप उनसे दिल की बातें कर रहे हो कि आपने ऐसा किया था उस टाइम, मेरे साथ ये हुआ था. I'm feeling so grateful to you कि आपने ऐसा किया मेरे साथ, आपने मुझे ये बोला है ना. So either you talk to them as if they're sitting next to you, or you talk to them in your mind, जो हम हमेशा करते ही रहते हैं वैसे भी.
तो आप अंदर से मन ही मन उनसे बातें कर लीजिए। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो मतलब डिस्ट्रैक्शंस हैं आसपास, तो आप उतना फोकस करके नहीं कर पा रहे हो, नो इश्यूज, यू कैन राइट देम डाउन। आप अपने जैसे जर्नल में रोज लिख रहे हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू कैन राइट एज इफ यू राइटिंग अ लेटर टू देम। और शायद जमाने से आपने लेटर किसी को लिखा भी नहीं है, हो गए ना जमाने हमें चिट्ठियां लिखे हुए। किसी ने लिखी है कोई चिट्ठी ऑफ लेट किसी को? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग अ लेटर। किसी ने लिखा है? एनीवन? नहीं लिखा ना? हाँ, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आई आई रिमेम्बर हमारे एक महापुरुष थे, वो कहा करते थे कि कोई चिट्ठी लिखता है ना, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कभी ना पोस्ट कार्ड में मत लिख के भेजा करो, हमेशा ना इनलाइन लेटर होता है ना जो बंद हो जाता है, उसमें भेजा करो। बिकॉज जब आप चिट्ठी लिखते हो ना, आपकी मन की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त होती हैं। all emotions, your emotions are you know flooded in that letter। वो उसके ऊपर सारे बह चुके होते हैं। और जिसके लिए लिखा होता है ना, जब वो उसको खोल के पढ़ता है, तो वो सारे के सारे उसको मिलते हैं। that person actually gets those vibrations and those feelings what you have written in the letter। that's what he used to say कि मुझे कभी भी चिट्ठी लिखा करो ना, तो कभी भी आई मीन पोस्ट कार्ड में मत लिखा करो, हमेशा बंद लिफाफे में लिख के भेजा करो। नाउ आई अंडरस्टैंड द लॉजिक। उस टाइम तो बच्ची थी, समझ ही नहीं आती थी, बट नाउ आई गेट द लॉजिक बिकॉज इट्स with the vibrations with which you write that letter flows in that paper and it reaches that person। वाइब्रेशन ही है ना, इट रीचेस दैट पर्सन। तो आज लिख लो एक चिट्ठी, 3 चिट्ठियां लिख लो, आपको भी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा चिट्ठी लिखना छूट तो नहीं गया, भावनाएं अपनी Yes. व्यक्त करना, भावनाएं अपने व्यक्त करना भूल तो नहीं गए हो। So because in emails ना we become very standoffish, you understand what is standoffish? मतलब लैंग्वेज ऐसी यूज करते हैं जो मतलब यूज होनी चाहिए। पर जब आप चिट्ठी लिखते हो ना, तो आपके मन में जो भी विचार, जो भी भावनाएं, जो भी वर्ड्स आ रहे होते हैं ना, आप वही लिखते हो। उस टाइम आप चुनते नहीं हो कि दिस ग्रामेटिकली विल लुक नाइस और दिस इज अ गुड वर्ड टू यूज। नो, यू डोंट यूज दैट, इट फ्लोज फ्रॉम योर हार्ट। अभी मैं कहती हूँ ना, जब आप रिफ्लेक्शंस लिखते हो या जर्नलिंग करते हो एवरी डे, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उस कागज पे आती है। सो आज कोशिश करो चिट्ठी लिखने की, और देखो चिट्ठी लिखना भूल तो नहीं गए हो, भावनाएं बह रही हैं या अंदर आज भी लुकिंग गुड के चक्कर में चिट्ठी ऐसे लिख रहे हो कि जो भी पढ़े उसको लगे कि हाँ कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी है, कितनी अच्छी हिंदी लिखी है, या Mhm. ये साउंड कैसा करेगा, डेस्परेट तो नहीं साउंड करेगा, कुछ ज्यादा ये तो नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग ना लॉजिकली बहुत सोचने लग जाते हैं जब हम ईमेल लिखते हैं, बिकॉज माइंड हैज बीन प्रोग्राम लाइक दैट, बिकॉज वो ऑफिशियल साउंड करता है। पर जब आप चिट्ठी लिखते हो, चिट्ठी, चिट्ठी आई है गाना है ना, चिट्ठी आई Yes. है, आई है, चिट्ठी आई है। तो चिट्ठी जो है ना, यहाँ पर चिट्ठी है, दर्द, कितने अच्छे से गाने हैं पुराने चिट्ठी के, because it actually talks about the emotions of people। yeah, तो कोशिश करो चिट्ठी लिखने की। हाँ जी। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Okay, I want you to read this paragraph, this sentence slowly, and let's see what are the 3 things we are going to achieve by doing this practice. Okay. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first
and foremost, it makes you happy. Okay, The second, number yes, one, whenever you're makes you doing this practice, it makes you feel happy. आपकी feelings shift होती हैं. You feel lighter, you feel happier. That is the measure of gratitude, right? So this is number one. Let's see what is the number two. the secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. Okay, number two, क्योंकि आप practice कर रहे हो gratitude की, gratitude is working in the realm of law of attraction. जो आप भेज रहे हो सिमिलर चीजें आपकी जिंदगी में और आएंगी. जब आप खुश हो रहे हो, when you are happy and you're paying gratitude, you become a magnet. So मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वैसी ही और खुशनुमा चीजों को, अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को, अच्छे सर्कमस्टांसेस को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगी. सो दिस इज द सेकंड. द नंबर वन इज दैट यू विल फील हैप्पी. Right? Number two is it will attract wonderful things in your life. Now, the last one. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. Yeah. So, और आपको खुशी देगी और ऐसी चीजों को आपकी जिंदगी में लाएगी. सो इट्स अ थ्री फोल्ड. आपको पता विन विन सिचुएशन है यहाँ पे. घाटे का सौदा तो है ही नहीं. ये पूरी बुक जब आप प्रैक्टिस करते हो, एवरी सिंगल प्रैक्टिस इज अ विन विन सिचुएशन. जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जिंदगी बस खुशहाल होती चली जाएगी. आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड yesterday when we were doing this money का practice, and we were all doing that in a form of a meditation, that you are going down memory lane and think about people who have done things for you or given you money or something, and we all were thinking about it, and and suddenly after that exercise, that meditation, whatever you call it, there was a guy. He shared that when he was practicing this, when we were doing the meditation, he was thinking about his nana nani, because every time he used to go, they used to give him money, which he never paid gratitude to. And he was paying gratitude for them and feeling happy from within. And the moment he opened his eyes and he saw his mobile, 5 lakh rupees was transferred into his account. Isn't that amazing? Wow, that's great. Isn't that amazing? Yeah. And Yes, then there was another lady who had come. She was sharing that she forgot to put money in her purse, and she and her husband were at work. उनका कुछ शॉप है या कुछ है. And he said, मैं तो आज बैग ही नहीं लेके आया, तू पैसे लेके आया हो तुम? She says, मैंने पर्स चेंज किया, let me just check. And she said, I had also forgotten to put my wallet in my purse. पर्स उठा ली, मैं उसमें wallet में पैसे, wallet लाई नहीं. And they had to come to Gurgaon for this program. And they just paid gratitude, and there's kahin na kahin se to ho hi jayega. And she said, we had so much of sale during the day that she says, my purse is full of money right now. Isn't that amazing? People are yes, causing those kinds of results in their life because they're practicing it. सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आता है. फायदा उसी से होता है. सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है. The more you practice, the more you have surrendered to the practice, the more value, the more things you will attract in your life. That is the magic. सोचो ना, उसको तो खुशी मिली. When she was sharing, everybody was feeling so happy for them, and feeling happy because it works. And imagine, they also became those people who made a difference to people who are listening to them. Can you get that? Can you see that right now? जिन लोगों ने वहां पे ये दोनों लोगों ने शेयर किया, they also became a person in somebody else's life who's made a difference in their life, because they got it that if they can make it, I can also do it, and I can start practicing it in such a way that I also attract it.
कहीं ना कहीं वो उनको वो डायरेक्शन दिखा गए ना, गाइड कर गए ना. Yes. Just imagine how people magically come and touch your lives. Yeah? And you can be that, that light which can rekindle other people's flames. So आज उन 3 लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने आपकी लाइफ को रिकिंडल किया है, राइट. एंड उसके आपने फायदे देख ही लिए, कितने फायदे होने वाले हैं. लेट्स लुक एट दी मैजिक प्रैक्टिस. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Okay, pause. So number one, of course, we all know we have to do count our blessings. 10 blessings आपको लिखनी है और उसके साथ ये लिखना है why are you being grateful, एंड उसको फिर रीरीड करना है और हर एक पॉइंट को पढ़ते हुए आपने महसूस करते हुए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, राइट. सो दैट इज वन पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट इट सेज फाइंड अ क्वाइट प्लेस अलोन sometime during the day and think of 3 people who made a difference in your life. Now, अगर हम ये कहते हैं ना यार टाइम नहीं मिला मुझे, that means you don't want it. You don't want your dreams to be fulfilled. You have written your dreams and desires, but you're not passionate about them. You don't want them कि मुझे चाहिए ही चाहिए. मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, चल तो रही है जिंदगी. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको भूख कितनी है. अगर आपको भूख है कि आपके सपने पूरे हों, आपको अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको वो पैसा मिल जाए, आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपको वो क्लाइंट्स मिल जाए, आपको घर चाहिए तो आपको वो घर चाहिए, आपको रेंट वाले घर में नहीं रहना है या आपको छोटे घर में नहीं रहना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको ट्रैवल करना है, आपको अपने रिश्ते अच्छे बनाने हैं, मुझे रोज की चिक चिक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हमारे घर में शांति हो, हमारा आपस में बहुत सारा प्यार हो और हम एक दूसरे के साथ एज अ टीम बन के काम करें, एज अ कंपेनियन बन के रहें. इफ यू वांट ऑल दैट एंड यू रियली रियली वांट इट, तो ना ये बहाने नहीं आएंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला. You will find a time to sit quietly and do this practice and do all the practices every single day. And people who say ना कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, that means उन्हें चाहिए नहीं है. वो सिर्फ कहते हैं चाहिए, एफर्ट नहीं करना चाहते हैं. जब तक कुछ मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है. वो कहते हैं ना भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. अगर आपको चाहिए तो डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज आई डिडंट गेट टाइम और देयर वर टू मेनी पीपल इन द हाउस और बहुत मेहमान आए हुए थे तो मैं अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पाया. अरे बाथरूम में लॉक कर लो यार, गो एंड सिट इन द बाथरूम. डोंट गिव मी ऑल दिस एक्सक्यूजेस. बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच डू यू वांट इट. वो भूख कितनी है अंदर से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो. I mean, I saw these people yesterday who had come and I was amazed. But the people came from so far off places, मतलब गुड़गांव में, नोएडा से, गाजियाबाद से, पता नहीं कहाँ से आए थे because they wanted to practice money magic, because they wanted money. They came all the way just because they were getting a chance to attend this session offline, to have that mass gratitude, to have that power of that frequency, high frequency. वो power को absorb करने के लिए they came all the way. There was a guy who had come from Gurdaspur. इतनी दूर से आया था, वहां पे किसी स्कूल का ओनर है. He had come to Delhi for some work and he came to know that this is happening and he came all the way. He had to catch a train in the morning, but he came because भूख है.
हमारे ग्रुप में देखो ना, लोगों को भूख ही नहीं है, दे जस्ट वांट टू डू इट कि हाँ ठीक है कर लेंगे, अच्छी चीजें कर लेनी चाहिए, बट वो भूख नहीं है अंदर से कि चाहिए ही चाहिए। अरे चाहिए तो भूख जगाओ अंदर से, and do these practices. I really want all of you to get whatever you want in your life, including me. So let's practice it. Practice it like our life depends on it. Yeah? Hanji, padhe. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Or just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay. So what you're supposed to do is वो तीन लोगों के बारे में एक ही जगह बैठ के एक ही बार में आपने सोचना है कि क्या था ऐसा जिसकी वजह से आप उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उन्होंने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया था, किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, वो उनसे आप बैठ के बातें करेंगे। इफ यू कांट टॉक टू देम, मन में बात करना चाहे मन में कर ले, फिर भी नहीं करना चाहे तो आप उनको चिट्ठी लिखेंगे। So this is what you're supposed to do today. And last, of course, you have to do your magic rock practice, right? So thank you so much, Almas, for reading today's chapter. And it was a wonderful chapter, and I'm feeling so grateful to all those people जो आज मुझे अचानक याद आए हैं, जिनको मैंने कभी सोचा ही नहीं. And I'm really grateful to them, and I'm going to definitely write letters to them or talk to them, whatever. But I will definitely do that. So thank you so much. Anybody has any question or want to say something? We could share करना है. हेलो हाँ जी वीना जी. सबसे पहली मेरी चिट्ठी, सबसे पहले मेरा प्यार आपके लिए. थैंक यू. Thank you so much. थैंक यू वेरी Thank मच. you. Thank एंड you. देन आई थैंक मिस्टर प्रेमगीत जी, एनजी कपूर, Yeah, हाँ जी. जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करवाया. जी जी. दर्शन जी, पूरन जी, अलमस, एक और आपकी फ्रेंड है, नाम उसका भूल गई, एस से नाम है उसका, नाम श्रुति है शायद. श्रुति दत्त. हाँ हाँ. आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. आई हैव लर्नड. बहुतों से तो मिली भी नहीं, बट रियली इट्स अ वंडरफुल ग्रुप. चाहूंगी कि कभी हम लोग सब इकट्ठे मिलें. बहुत मन है मेरा. जरूर करेंगे कुछ ऐसा. आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आई एम फीलिंग सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. Yeah. थैंक Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So So Veena ji, we can speak to those people directly or just write it down to them. या. so you don't have to speak to them personally. You have to sit down and imagine that you're talking to them. Okay, Because if you talk to them, you will not be able to talk to all three people in one go. correct, correct. And the purpose is that you actually speak to, you do this exercise in one go so that you raise the momentum of gratitude. You raise the power of gratitude, right? So that is why either sit down and imagine that you're talking to them. You can talk it aloud as if somebody is sitting next to you, or you can talk to them mentally. जैसे मन में बातें करते ही रहते हैं ना, मन में बात कर सकते. Or the third option is you can write a letter and just pour out your heart. Yeah. So any of these things, three ways you can do this exercise today. And yeah. मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी चिट्ठियां मेरे पास आज भी पड़ी हैं. 8th क्लास से मेरी मैरिज तक हम लोग चिट्ठियों से बात करते रहे. बिकॉज मेरी पटियाला से मैं जलंधर शिफ्ट हो गई थी, वो पटियाला में थी. आज मुझे उसकी चिट्ठियां याद आ रही, मैं खोल के उनको भी पढ़ूंगी. Very good. So she can be one of those people also. So Yeah. when she's talking about chitti na, my grandfather passed away in 1969, April 69, and today at this age, my chacha has preserved that letter, and he's written his autobiography, and he's actually
उस लेटर को उन्होंने एज इट इज वहां पे उसकी पिक्चर डाली है. And if you can actually feel the emotions and you can imagine the feelings of the person who's अगर आपने अपनी फ्रेंड की चिट्ठियां रखी हैं तो वो आपके लिए कुछ मायने रखती है ना, तभी आपने रखी हैं. अरे मेरे पास मेरे पापा की, मेरे मामा की, मेरे हस्बैंड की मैरिज से पहले की भी चिट्ठियां पड़ी हैं. बेटर देन सारा सेइंग. हाँ, फोटो खोल के आज का दिन उसमें बिताऊंगी. क्योंकि वो आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि जब आप उनको पढ़ते हो तो आपको लगता है आप उनसे बातें कर रहे हो. या आई एम गोइंग टू डू इट. आज का दिन चिट्ठियों के नाम. Good. So thank you very much. Okay, let's do the prayer. Thanks a lot. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you to. Okay, guys, thank you so much, and I'll see you tomorrow. And आज हमारे 12 चैप्टर्स खत्म हो गए, and कल से हम अपने ड्रीम्स के ऊपर, जो हमने ड्रीम्स लिखे हैं उसमें से थिंक अबाउट टॉप 3 ड्रीम्स, उनको हाईलाइट कर लो अपने बुक पे, नोटबुक पे, जहां भी लिखें. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी वर्किंग ऑन आवर ड्रीम्स, जो हमें चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में जो चीजें चाहिए उसके ऊपर, राइट? So thank you very much, and I'll see you tomorrow. Have a wonderful day. Thank Same you, to you. ma'am. Thank you.